Very good morning and Jai Hind, my dear students. So, we have done tables, we have done one day book exercise, one day we have done 2-digit multiplication, right? Today, we are going to do the multiplication of 3-digit, that means ones, tens and 100. 3-digit multiplication we are going to do by single digit. There will be ones, tens, 100, there will be 3-digit, and then we have to multiply by 1 digit, right? So today's topic is multiplication. In notebook you have to do. कहाँ करना है? सबको अपनी मैथ्स की न्यू नोटबुक में करना है, राइट? एक्साइटेड? जब भी हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, व्हेन वी मूव टू सेकेंड टर्म वी गेट एक्साइटेड ना कि हमारी न्यू कॉपी है, न्यू चैप्टर्स होंगे. सो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? So today we are going to do the multiplication, students. Are you all ready? Yes? Do you have scale with you? Do you have pencil, eraser, and what do you need? Yes, your maths notebook. Keep everything with you. That's your maths notebook, and then keep your pencil with you and eraser if needed, and use pencil color for drawing the line, so it will look very nice, students, right? So take out everything fast and we will start today's topic. All right, so let's start the today's topic. Now first of all of you take out a new page and write with me whatever I am writing, and then I will solve the question on the board, right? First of all, you need to write the questions. So let's start writing the questions. Now, first of all, you need to write here what? CW, classwork, and the topic is multiply, or you can write multiplication also. So write down here today's date. All right, write today's date and write here ones, tens, 100. Here again ones, tens, 100. Write properly ones, tens, 100. If you want, you can write it with color pencil also. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Written. Now let's write the 4 questions which we have to do in class today. So after this I will explain you it on the board, okay, one by one each question. So here we have 190, okay. Wait, let me erase this. We need to leave the first line, okay. For what? You remember? Yes, for carry. So now write 190. When we are saying 190, that means 1 is at 100 place, 9 is at 10s place, and 0 at 1s place. Now 190 multiplied by किस number से multiply करना है? 3. We need to multiply it by 3, and then at last we will write answer. First of all, note down all the questions and then we will start the explanation. Next question. 162 multiplied by 4. Write down, students, and copy down each digits properly. कोई गलत copy down नहीं करेगा. All right. Next we have 52. 52 multiplied by 9. Multiplied by 9. Again, next number is 66 multiplied by 8. So today we have 2-digit also and 3-digit multiplication, right? So these questions we are going to do on the board. So in this way you need to maintain your notebook. Why I am showing you this PPT? So that you will do in the same manner. ऐसे ही आप अपने नोटबुक में करोगे, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, है ना? अपनी नोटबुक ऐसे ही रेडी करनी है.
Isn't it looking nice? Yes. So बहुत ध्यान से एक एक चीजें नोट डाउन करनी है, समझना है और वैसे ही करना है क्वेश्चन. ऑलराइट. और यहाँ पे हम क्यों लाइन छोड़वाते हैं? टू राइट द कैरी. कैरी लिखने के, अदरवाइज कैरी मिस हो सकता है. सो कैरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट, राइट? सो लेट्स start solving the question on the board. All right, so let's start. Now let's start the explanation of the question number 1. First of all, we are doing question 1. ठीक है, first question क्या है? 190. 190, right? Multiplied by 3. किससे multiply करना है? 3 से. Right? Now after that we will write answer here. कोई confusion? I think it's visible to you all, right? Now 3 zeros are. What is 3 multiplied by 0? 3 times 0 is 0. 3 zeros are 0. 3 times 0 is 0. Right? Next 9 multiplied by 3. 9 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आएगा? 9 3s are क्या होता है? Yes. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27. Right? So we will write here 7. 27 का 7 यहाँ लिखेंगे और 2 क्या होगा? Carry. 2 will be carry and we write carry in circle. Right? Next 3 1s are 3. 3 1s are 3 plus 2. 3 1s are 3 plus 2. It becomes 5. Yes, it becomes 5. So what answer we have got? We have got 570. We got 570. So you have to do like this, the first question. Now I will be solving the next question. All right. Now the next question. Next question is 162 multiplied by which number? 162 multiplied by 4. Multiplied by 4. So let's do it. All right. So now 4 2s are 4 times 2 is 4 2s are 8. So we will write here 8. Right? Next 4 multiplied by 6. That means 6 4s are या 4 6s are is the same thing. 6 4s are 24. 24. So 2 will be the carry number. 2 will be carry. Now 4 1s are 4. 4 1s are 4 plus 2 6 plus 2 6. So what we have got? 648. We got answer 648. So all of you write down the answers properly. 648. This is question number 2. Now we will proceed with question number 3. Right? Now let's do the third question. That is 52. 52 multiplied by 9. Multiplied by 9. So 9 2s are how much? 9 की टेबल सबको आती है ना? रिवाइज किया टेबल? Good. 9 2s are 18. So we will write here 8. 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे and 1 will be carry. 1 will be carry. Carry हमेशा सर्कल में लिखना है. Right? Now 9 multiplied by 5. That means 9 5s are 9 5s are कितना होता है स्टूडेंट्स? Yes, 45 plus 1. 45 में plus 1 करेंगे क्या आएगा? 46. So we will write answer 46 here.
So the answer is 468. 468. The answer is 468. We got the answer 468. Now we will be doing the fourth question. कौन सा क्वेश्चन करना है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास वर्क, फोर्थ क्वेश्चन. Okay, so I will be erasing the board now. Now question number 4, that is 66. 66 multiplied by 8. Now everybody has learned tables from 2 to 15. सबने टेबल लर्न किया है? नहीं किया है तो फिर जरूर करना है ना? You have to learn the table, otherwise तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? So now अब 8 की टेबल हमें पढ़ना है, ठीक है? कितने टाइम्स? 8 सिक्सा. 8 सिक्सा कितना होता है? Yes, 8 सिक्सा कितना होगा? फास्ट, that is 48. 8 सिक्सा 48. या हम ये भी कर सकते हैं 6 8 दोनों की मीनिंग सेम है. 6 8 या 8 6 बोथ आर सेम. 8 6 48 and 6 8 48. So we will write here 8 and 4 will be the carry and this will be in the circle. Now 8 6 48. 48 में हमें 4 ऐड करना है तो 48 49 50 51 52. 4 ऐड करने पे क्या हो गया? 52. So we will write here 52. Now what answer we have got? We have got the answer in 3 digit. Answer 528. ये हमें क्या मिला? प्रोडक्ट. जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. It is called answer. But what is this? This is product. What we are doing? Find the product. Find the product. हमने क्या निकाला? Product निकाला. मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? Product. So this is your class work. Now I am going to give you today's homework. आज का homework मैं दूंगी, ठीक है? So take out new page and note down the question from the help of PPT. I am writing on the PPT. You have to note down from there. Okay. So I am writing from. Students, before giving the homework, I want to tell you one more thing. The mistakes which you used to do in multiplication, right? So whenever there is multiplication by 0, अगर 0 से multiply होता है तो क्या करना है हमें? Like for example 4 है. 4 multiplied by 0 क्या होगा? 4 zeros are 0. ना कि आप 4 लिखोगे. समझ में आ रहा है? Now for example there is a number 302. ठीक है? Multiplied by 2 है. For example ये क्वेश्चन है ना? ठीक है, ध्यान से समझना है आपको. उसको अभी समझ में आया कि जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं we get 0. So now why I am explaining this? I am telling you. Let me erase this part. You need to understand only this much right now. Okay. So I am erasing this today. Okay. Now 2 2s are how much? 2 2s are 4. Now 2 zeros are 0. Now 3 2s are 6. Now for example there is a change in question. ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी चेंज कर रही हूँ. जब कैरी वाले 0 क्वेश्चंस होते तब क्या करते हैं? अच्छे से इसको समझना है बिकॉज आप क्वेश्चन जब होमवर्क में करोगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है. राइट? व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग 0 क्वेश्चन? क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक इसमें होती है. ओके, सो लेट मी इरेज. नाउ सी हियर, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 6 3s क्या होता है? You all know 6 3s are 18, right? 6 3s are 18. So we will write 8 and 1 is carry. Now what to do? Now what to do? क्या हम 3 zeros are 0 लिखेंगे या 3 1s are 3 लिखेंगे? ये मिस्टेक्स आप लोग जरूर करते हो. So don't do this. यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 zeros are क्या होगा? 0. 3 zeros are 0 प्लस कैरी को करना है. हमें क्या करना है? कैरी को ऐड करना है. किसमें? 3 zeros क्या हुआ? यहाँ देखो
3 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो गया? 0, है ना. अब हम 0 में क्या ऐड करेंगे? 1. 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1. So 3 zeros are 0 plus 1. So we will write here 1. Got it? Now 3 2s are 6. So what we have got answer? 618. समझ में आया जीरो वाले क्वेश्चन? Okay. So now I am giving you the today's homework. Alright. So be ready. Now we will write down the homework questions. So let's start today's homework. Everybody write down the heading first, homework. Let me write that. Okay. So now I am going to choose the black pen so that you can see it properly. Now here we have homework. H, W, and the heading will be same, that is multiply. Multiply. And here will be today's date. As always you used to do. Now write down the 4 questions for the homework. Draw the line, one horizontal and one vertical. ठीक है, horizontal and vertical lines ऐसे जैसे मैंने lines बनाई हुई हैं, ये draw करनी है आपको. And then write here ones, tens, 100. Okay, here again ones, tens, 100. Here again ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Okay. After writing, the first homework is 326. 326 multiplied by 3. So this is your first question. Right? In every question you need to write the answer. That is must. Okay. Next is 403. 403. You have to take care with this question. ये जीरो वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना. सो यहाँ पे कैरी भी आएगा. आप लोग यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना. ओके, लीव वन लाइन. और शुड आई लीव? ओके, वेट, आई एम लीविंग सो दैट यू कैन डू इट प्रॉपरली. ओके, लेट मी leave one line so that you will also leave the line. Okay, again I am writing 326 and here is 3. Okay, got it? Next we have 403 multiplied by 7. You have to leave one box after writing ones, tens, 100. Now after that, next question is 123 multiplied by 2. Okay, next last question, 146 multiplied by 4. So complete your homeworks properly and timely. अगर आप होमवर्क को पेंडिंग रखोगे तो आपके होमवर्क क्या होते हैं? पेंडिंग रह जाते हैं. फुल टाइम आपको फिर बाद में करना पड़ेगा. फिर आप कहोगे ओहो इतना सारा होमवर्क हो गया. बट इट्स नॉट लाइक दैट. होमवर्क तो आपको रोज मिलता है ना, और डेली आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू द पीडीएफ ऑल्सो, सो नॉट टू वरी अबाउट इफ इन केस इट्स लेफ्ट. ऑलराइट, सो लेट मी टॉक. ऑलराइट, सो did you understood the zero question? You understood this question? Because इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड आप मिस्टेक्स करते हो एंड फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, है ना. सो डोंट डू दैट. अच्छे से वर्क करना है, बहुत ही ध्यान से टेबल रीड करना है. अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्टली आप नहीं कर पाते हो, लाइक ऐसे 8 6 कितना होगा, ऐसे नहीं कर पा रहे तो रीड होल टेबल, लाइक 8 1 8, 8 2 16, ऐसे करके आप पूरा रीड करो एंड देन डू द क्वेश्चन. ठीक है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डायरेक्टली करने लगोगे. ऑलराइट, सो till then, bye bye, take care, and in the next class we will be doing which work? Book work. So bye bye, take care, have a nice day students.